We're moving on now. We have some breaking inputs coming in. US bats for justice in 26/11 attacks और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका की पूरी तैयारी है आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। साथ ही अमेरिका ये भी कह रहा है कि दोज बिहाइंड 26/11 अटैक्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो भारत का साथ देते हुए अमेरिका भी 26/11 के मामले में ये बयान दे रहा है कि जो मास्टरमाइंड थे इस हमले के, मुंबई में जो अटैक हुआ था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल वेदांत पटेल की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है जिसमें वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अमेरिका का 26/11 पर क्या स्टैंड है। जहां तक बात आतंक की है, अमेरिका का कहना कि वो तैयार है आतंक की किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए। यूएस इज कमिटेड टू कन्फ्रंटिंग टेररिज्म एंड इन फैक्ट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द 26/11 अटैक्स दैट टुक प्लेस इन द मैक्सिमम सिटी। US says those behind the 26/11 attacks must be brought टू जस्टिस। न्याय होना चाहिए, ये मांग अब अमेरिका से भी उठ रही है। हालांकि भारत कई डॉजियर सबमिट कर चुका है, पाकिस्तान उस पर 1 इंच भी अब तक आगे नहीं बढ़ा है कार्रवाई के लिहाज से। और 26/11 के जो मास्टरमाइंड है उनको शय भी पाकिस्तान ने दे रखी है। Let's first go across to Rishabh who's joining us on the broadcast with more details. Rishabh, एक तरफ भारत डॉजियर पर डॉजियर पाकिस्तान को दे चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा बयान 26/11 मामले को लेकर। अमेरिका का कहना कि वो आतंक की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है और साथ ही 26/11 के मामले में ये कहा कि न्याय होना चाहिए। दोज बिहाइंड द अटैक मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। देखिए, अगर अमेरिका की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है कि टेरर एक्टिविटीज पर लगाम लगाई जानी चाहिए। अगर भारत के अलावा कोई ऐसा देश है जिसने टेररिज्म को, आतंकवाद को अप क्लोज देखा है तो वो अमेरिका है। हमने 9/11 का हमला देखा है, हमने कई ऐसे हमले देखे हैं अमेरिका में जो कि आतंकवादी हमलों के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए अमेरिका ने हमेशा से भारत का सपोर्ट किया है 26/11 में। आप चाहे क्वाड की जो पिछले साल स्टेटमेंट आया है उसमें देखिए, उसमें 26/11 के ऊपर बाकायदा 2 पैराग्राफ में एलैबोरेटेड रिस्पॉन्स दिया गया है। ये कैसे क्वाड के सारे सदस्य, जो चारों सदस्य हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो 26/11 हमलों के जो मास्टरमाइंड हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको सजा दिलाने के पक्षधर हैं। चाहे आप आज का स्टेट डिपार्टमेंट का ब्रीफिंग देखें जी ऋषभ, लेकिन बड़ी बात यह है कि केवल इन बयानों से और शब्दों से कुछ नहीं होगा। क्या प्रेशर पाकिस्तान पर बनाया जाएगा? क्या अमेरिका वो भी करेगा भारत के साथ मिलकर? ये भी देखना होगा। आप बने रहिए ऋषभ, पहले सुन लेते हैं कि वेदांत पटेल ने कहा क्या। Is it correct or not that the Secretary of State signs off on the final surrender of any extradition? What I know to be true, which I don't understand why you're not saying here, is that the Secretary of State has the final signature. What I can say is that we are committed to confronting terrorism across the world, and we continue to call for those involved in the 2008 Mumbai attacks to be brought to justice. Rishabh continues to be with us. Rishabh, आतंक के मुद्दे पर अगर देखा जाए तो पहले भी पाकिस्तान को अल्टीमेटम अमेरिका दे चुका है, लेकिन वो भारत के लिहाज से नहीं था, वो आतंक के मुद्दे को लेकर था। अब 26/11 का खास तौर पर जिक्र हुआ है। ये कहना वेदांत पटेल का कि वी आर कमिटेड टू कन्फ्रंट टेररिज्म एंड दैट 26/11 परपेट्रेटर शुड बी बुक्ड। Well, definitely. You see, US has time and again warned Pakistan, but whether mere warnings will work to deter Pakistan from supporting that homegrown terrorism the way they export the whole business of terrorism to world, that is still questionable. We haven't seen any कोई concrete ऐसा कदम दिखा नहीं है हमें पाकिस्तान का जिसमें हम ये कह सके कि हाँ, पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ विश्व दबाव में या यूएन के दबाव में ऐसा कोई कदम लिया है। हाँ, पिछले कुछ सालों में कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन वो आतंकवाद जगत की वो छोटी मछलियां हैं। जो बड़ी मछलियां हैं वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान में। सो दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. There is a global pressure on Pakistan to rein in the terror, but what Pakistan is doing is something that is baffling. And now, when we know that be it David Headley or be it Tahawwur Rana, who are in US custody, and Tahawwur Rana might be extradited to India very soon. Right, Rishabh, stay on with us. We also have Arasan Singh joining us on the broadcast. Now, earlier also we heard Arasan Singh, America asking Pakistan, rather warning Pakistan to put an end, to do more to stop terrorism. But this time around, 26/11 has been mentioned specifically. How significant is that? On ground, is it going to change anything? Will it have any sort of impact?
My understanding is that because of the changed or altered geopolitical circumstances in favor of India due to Indo-Pacific strategy that both countries share, the Americans are a little more, active against war against terrorism than what we saw in the past, and that explains their, altered attitude. But I would say that, I have been for the policy that, there is no country, as much buffeted by, jihadi terrorism as India, historically and even now. And most of these, pan subcontinent or global jihadi organizations are functioning from this subcontinent. So therefore, whether it is, I've been always of the opinion that we have to tackle it ourselves. And if somebody comes to our, to our support, well and good. But otherwise, our policy, because it's a war, it's a proxy war going on, and we have to find an answer to this proxy war. If the Americans support us or any other country in the world, decides to support us, well and good. But otherwise, we have to protect ourselves as a nation. So when it comes to protecting our nation, no cost is costly enough. Whether it is in the diplomatic arena or whether it has economic consequences, I don't know, because it really doesn't matter, because at the end of the day, the nation state has to be secured. Otherwise, it cannot thrive economically, socially, and politically. Now, for example, that because you are vulnerable to terrorism, see how the Chinese are using this opening in your politics, Right. in your society, in your even in the media. Right. Absolutely. So Arasan Singh, thank you very much for joining us on the broadcast with your perspective. Thank you for talking to us about this issue. It remains to be seen whether or not this will have any impact on ground. Of course, several warnings already have been issued to Pakistan. This time around, America talks about perpetrators of 26/11 to be booked.